Yes, yes, you are audible. Yes. All right. Okay, so good evening, everyone. So today's session is all about web application security and like web pen testing. So like आज के इस वेबिनार में हम लोग बेसिकली लाइक समझेंगे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, उसके अंदर किस तरह लाइक वो इम्पोर्टेंट क्यों है, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती है जो हमको फाइंड करनी चाहिए. देन देयर इज अ करियर ऑप्शन इन द वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग कॉल्ड बग बाउंटी ओनली. सो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे. एज अ बिगिनर किस तरह स्टार्ट कर सकते हो, क्या उसकी प्री रिक्विजिट है, एंड लाइक मैं पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा. सो विल कवर सो मेनी टॉपिक्स अबाउट लाइक वेब एप्लीकेशन penetration testing. So stay tuned to the like till the end to like not miss anything. So let's start the webinar. So let me share my screen. Tell me if it's visible or not. Okay. I hope my screen is visible to everyone. All right. Okay. Thank you for confirming. Okay. So let's start with the presentation itself. And once the presentation is over, we'll move to the practical part. So first thing is web application penetration testing. This is the topic which we're gonna cover in this whole webinar. So next is the importance. So now, like I have like mentioned some key points about some key, we can say some key importance. But yeah, there are lots of impact of like not implementing web application security. So one of the most common is data breaches. As you know, like recently there are lots of data breaches happening day by day. And if someone have idea, I am not sure if like anyone here has idea about it. But recently, like UIDAI, which we call Aadhaar's data got leaked. There was a mass data leakage in the like Aadhaar's website. So that caused so many people's data to be breached, and it's totally a heavy threat to our society and also to an individual. So that's the first like we can say concern for us कि डेटा क्यों लाइक हमारा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए वेब के अंदर. सेकंड इज फाइनेंशियल लॉस. ऑब्वियसली अगर वेबसाइट का कोई भी डेटा लीक होता है या फिर फॉर एन एग्जांपल वी कैन से लाइक कोई वेबसाइट है लाइक अमेजोन. अमेजोन के अंदर भी है और लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल डिटेल्स. अगर वो डेटा लीक होता है तो फाइनेंशियल हेलो। लॉसेस होने के चांसेस काफी हद तक हाँ भैया। ऑब्वियसली इंक्रीज होता है. हाँ So हाँ, that's आप the फेंक दो ऊपर, second चाबी फेंक threat. दो, मैं दे दूंगा। Let's talk about the third one, हाँ, जहाँ भैया खड़े which हैं is ना, यहाँ पे फेंक दो। disruption of services. Now हाँ। ये जो threat है वो like वेबसाइट ओनर की उस तरफ से हम लोग थोड़ा ज्यादा कंसर्न इसका हो सकता है. जैसे फर्स्ट टू जो है which is data breach and financial loss, वो एज अ क्लाइंट और एज अ यूजर हमारे लिए ज्यादा like नुकसान कर सकता है. Third one is like more effective, or we can say like it will put a more impact on the server, or we can say the website owner. बिकॉज लाइक अटैकर्स जनरली क्या होता है, अभी रिसेंटली लाइक हुआ था कि एक वेबसाइट लाइक काफी वेल नोन वेबसाइट थी, वो काफी लाइक वी कैन से कुछ मिनट तक उसके ऊपर डीडोस अटैक करके उसको डाउन कर दिया गया था. सो अगर हम लोग किसी नॉर्मल वेबसाइट की बात करें देन इट्स वेरी बेसिक कि शायद एक आध मिनट बंद हुआ है तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर कोई काफी लाइक वी कैन से काफी पॉपुलर वेबसाइट है, फॉर एन एग्जांपल अमेजोन अगेन. अगर अमेजोन के अंदर लाइक वी कैन अज्यूम पूरी दुनिया अमेजोन यूज करती है, एक मिनट के अंदर कितने ऑर्डर्स होते होंगे. अगर वो 4-5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो उनका लॉस कितना होगा, राइट? यस, राहुल, एनी डाउट? हेलो. ऑलराइट. सो दैट्स द थिंग. एंड ये बेसिकली सो बेसिकली ये चीज लाइक अफेक्ट करती है जब अगर आपकी वेबसाइट काफी पॉपुलर हो, जिससे डीडोस अटैक एंड ऑल. सो ये सारी है, ये तो काफी बेसिक सी लाइक वो चीज है. बट यस, द इम्पैक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मैं पूरा ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी की बात करता हूँ यहाँ पे, वेब का नहीं, ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी का भी देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट. और उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वो इतना हो सकता है.
उसका इम्पैक्ट कितना भी आगे जा सकता है। कोई प्रिविलेज एस्केलेशन करने की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर उसको आगे एक्सप्लॉइट करते करते उसका कहीं से कहीं तक इम्पैक्ट पहुंच सकता है। हम उस चीज को लाइक ऐसे ही डायरेक्टली हम थोड़ा बहुत वी कैन से अज्यूम कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, बट उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, साइबर सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसके ऊपर कोई भी अटैक होता है, देन देयर इज नो लिमिटेशन कि उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। इट कुड बी लाइक एंडलेस। Okay, will the session be recorded? So actually, I was planning to Yes, yes, record, yes, but yes, yes. okay, The session will be recorded and you can all right. watch it again on YouTube if you missed it. Okay. Mhm. All right. Thank you for confirming. And okay, so let's continue to our next topic. So there are lots of impacts. So when we'll go to the like practical part, we I'll also explain the impact along with that. So now let's understand few common vulnerabilities about web application. So I think generally most of people have idea about these kind of vulnerabilities, but when we'll go to like practical demonstration, we'll learn few like we can say unique vulnerabilities, which are less likely to be found by normal attackers, or we can say bug bounty hunters. So that could be very helpful for you if you like stay till the end, because we'll cover very unique vulnerabilities in the end. Okay, so let's understand SQL injection. Obviously, everyone knows SQL stands for Structured Query Language, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक कोई भी अटैकर वी कैन से अटैकर जो SQL डेटाबेस होता है उसकी क्वेरीज लगा के, या फिर वी कैन से SQL क्या होता है बेसिकली, जैसे हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं अपना नोट पेड ऑन करता हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे SQL किसी का होता है, कोई ऐसा है जिसको SQL आता हो, SQL लैंग्वेज। All right, no issues. So we can say SQL queries. Okay. So basically SQL के अंदर हम लोग एक सिंपल सी क्वेरी चलाते हैं, जैसे लॉगिन फंक्शन होता है, राइट? यूज्ड फॉर डेटाबेस, एग्जैक्टली दैट्स करेक्ट। सो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर लाइक लॉगिन पेजेस रहते हैं, राइट? सो फॉर एन एग्जांपल एक लॉगिन पेज है जिसके अंदर सामने वाला जो पर्सन है, अगर वो अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करता है, तो वेबसाइट पूरा ऑब्वियसली प्रोसेस करेगी कि ये यूजर नेम सही है या नहीं, पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों करेक्ट है एंड मैच करते हैं, देन एंड देन ही विल बी एबल टू लॉग इन, राइट? तो अब ये लॉजिक एसक्यूएल में किस तरह काम करता है, ये मैं एक बार एक सिंपल सी क्वेरी के साथ समझाता हूँ। So let's understand. Select start from users. For an example, this is the name of the table. So there, like assume there is a table called users. Okay, so this is selecting all entries from users table, and now we'll implement a condition here where username is equal to whatever like I have given the input, it will be stored here. So जैसे मैं अगर like जो अपना input box होता है उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ स्मिथ, ओके वेट, अगर मैं वहाँ पे यूजर नेम के बॉक्स में स्मिथ टाइप करूँगा तो यहाँ पे obviously it will be reflected here, and let's understand password. यहाँ से मैं नीचे इसको कर लेता हूँ so that, and password is equal to again some string which I have entered. So this is a simple SQL query. Okay. So now the concern here is कि what if I just, जैसे हम लोग like यूजर नेम का फील्ड है वहां पे मैं स्मिथ तो लिखता हूँ, उसके पीछे मैं इस तरह का कुछ लिखता हूँ। मैं एक बार नीचे फिर से लिखता हूँ ये चीज। Now what will happen here is let me just explain कि जैसे यहाँ पे अब ये क्या होगा, जनरली ये क्या था, पूरा एक स्टेटमेंट था, यहाँ पे ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, राइट? ये कोटेशन मार्क यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे एंड हो रहा है। अब अगर मैं ऐसा कुछ लगा दूंगा तो इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म होने वाली थी वो इससे पहले यहाँ खत्म हो जाएगी, एंड दिस
जैसे यहाँ पे कोई भी किसी को भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? All right, I'll try my best to like continue in English as much as possible, okay? But like yeah, I'll have to cover in both of the languages, but I'll try my best. Okay, so okay, anyone here who knows about any basic programming language? PHP, Python, Java, HTML, CSS. Okay, so like every single, or we can say each of the languages have a feature to comment the lines or comment the code, right? Okay, so like for example in Python we have hashtag, right? So it will comment the whole, like you can say that same line, or we can say the further code, right? So same as these kind of languages, SQL uses these things to, like we can say, indicate a comment. So for an example, if I am typing this kind of query and this, if I use this here, then the further query after these two dashes will be considered as commented. So it won't be executed, right? Like this is some simple logic in all the programming language. If this code is commented, then it won't be executed. ये code execute नहीं होगा यहाँ पे. So the same logic is being applied here कि जैसे यहाँ पे ये क्या करेगा, basically select start from users where username is equal to Smith, and the rest of the query will be commented because I have entered this here. So what will happen is the rest of the query will be commented. So the only query which will be like executing is this much. Select start from users where username is equal to Smith. So it won't even check for my password if my password is correct or not. It will just check my username. If it's correct, then it will directly like log me into the account. Okay, so this is a basic example of SQL injection. I hope I am clear here. Like, is there any doubt how this thing worked here? Any doubts? Okay, all right, that's perfect. Okay, so here this is the way that like how we can perform SQL injection. This is a common technique, but obviously when we go for like actual web application penetration testing, there are a lot of the things to bypass. But obviously, like we'll have to understand the basics before. Like before moving to the advanced part, we'll have to clear our basics. So this is the like most easiest example that I could find for like SQL injection. All right, so let's move on to the next vulnerability, which is cross-site scripting. Injecting malicious JavaScript code into website to steal user data or perform unauthorized access. Like we can say this is a very common vulnerability in so many websites. I'll also show the demonstration of this vulnerability in an actual website later on in the webinar. So like if possible, yes, it is possible because like I have the rights to, like I have taken the rights to show that specific vulnerability. So yes, I'll be showing that vulnerability in the and in the actual website. So for now, let's continue the like vulnerability. So as like we can say the cross site scripting, ये बेसिकली एक ऐसी vulnerability है जिसके अंदर क्लाइंट के ब्राउजर में कोई भी हम लोग malicious जावास्क्रिप्ट का कोड रन करा सकता है. नाउ फॉर एन एग्जांपल हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. जैसे लाइक ये एक पेज है, जैसे गूगल मीट का पेज है. यहाँ पे मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जैसे लाइक स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे इनके बीच में मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट का रैंडम में कोड डाल दूंगा. सो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सेस का प्रोटेक्शन है, बट काफी वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि वो इसको एज ए टेक्स्ट की जगह HTML का या फिर जावास्क्रिप्ट का कोड कंसीडर कर लेते हैं. सो इफ दिस इज कंसीडर्ड एज अ कोड, व्हाट विल हैपन? इट विल बी एग्जीक्यूटेड. करेक्ट. अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड मीट के अंदर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन सब के ब्राउजर में ये कोड क्या होगा? रन होगा. नाउ
ये तो काफी नॉर्मल सा कोड है, काफी लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अलर्ट करके दिखाते हैं, बट इसका एक्चुअल इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या है, काफी लोग ये चीज नहीं समझाते। लाइक जनरली एसक्यूएल इंजेक्शन की अगर, सॉरी नॉट एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के आप जनरली वीडियोस देखोगे तो आपको दिखेगा कि कोई भी लाइक यहाँ पे आईएमजी टैग लगा के या फिर स्क्रिप्ट टैग लगा के एट द एंड अलर्ट पॉपअप कर रहा है। सो दैट्स वी कैन से वो बस एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए पर्सन करता है, बट उस अलर्ट से कुछ नहीं होता। एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज वेरी डिफरेंट। सो फॉर एन एग्जांपल समझ लो कि like there is an object in JavaScript called document dot cookie. So for an example, I cannot show my cookie right now because obviously this is my account. I cannot show my cookie or else कोई भी account मेरा login कर लेगा अभी. So obviously, but I'll try my best to show the demonstration in that. So for an example, if I like write a simple JavaScript code to fetch the cookies from the current browser and send it to a specific server, or you can say a specific host, then what will happen? There are like ways from which I can steal cookies. Generally, cross-site scripting is the vulnerability which is used to steal cookies or for session hijacking. So if I am able to get your cookies, then obviously I'll be able to log in from your account, right? Without any username or password. Because username and password is for like we can say our security, but obviously when it's like in the backend or when it comes to the website, obviously website won't match your username and password each time. It will store a simple cookie that's a unique cookie for each and every user, and that cookie will prove that yes this is the user जो कि ये लाइक बोल रहा है कि मैं हूँ, राइट। सो अगर मैं आप सब लोगों की अगर यहाँ पे ये लाइक यू कैन से एग्जीक्यूट होता अगर यहाँ पे, तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन है, गूगल की साइट है। अगर प्रोटेक्शन नहीं होता, अगर मैं इसको बाईपास कर पाता, एंड जितने भी लोग मीट में सबकी कुकीज गैदर होके मेरे डिवाइस पे सेंड होती या फिर मेरे जो भी होस्ट है उसके ऊपर सेंड हो जाती, वहां से मैं कुकीज स्टील करके किसी के भी अकाउंट में लॉग इन कर सकता हूँ। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्ट। अब काफी लोगों को ये एक लाइक वो रहता है जो लाइक एज ऑफ बिगिनर्स रहते हैं कि क्रॉस स्क्रिप्टिंग में जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो बैकएंड को अफेक्ट करता है। सो हाँ, काफी लोगों को ऐसा चीज लगती है, आई थिंक शायद ना भी हो यहाँ पे कोई ऐसा, बट हाँ मैंने बहुत से लाइक एज ऑफ मेरी जर्नी में मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मुझे आके लाइक बोलते हैं कि क्रॉस स्क्रिप्टिंग में बैकएंड को अफेक्ट होता है। नो, there is zero impact on backend of the website in cross site scripting attack। क्रॉस साइट का मतलब ही होता है कि हम लोग लाइक क्लाइंट साइड पे करते हैं, किसी भी वल्नरेबिलिटी के अंदर क्रॉस साइट वर्ड यूज होता है, देन समझ लो कि वो है क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी। लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ये होती है क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज। इसके अंदर सर्वर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। There are basically two types of vulnerabilities. First is client side and second is server side. The SQL injection, which we like mentioned ago, is the server side vulnerability. Why? Because it obviously affects the SQL server. So that's why it is considered like we can say server side vulnerability. But on the other end, the cross-site scripting, it's just for the client side, right? So only client's browser will be affected in this vulnerability. So in this case, the cross-site scripting is not the like server-side vulnerability. So like make sure to mention these things, or we can say keep these things in mind, because to be a successful web application penetration tester or a bug bounty hunter will have to understand the root cause and impact of the vulnerabilities। I've seen so many people कि जो जब भी bug bounty hunting सीखना स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था मैंने सेम चीज की थी कि व्हाट आई डिड इज मैं लाइक डायरेक्टली मैंने कुछ vulnerabilities उस टाइम पे सीख ली, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कि जैसे इस तरह से हमने स्क्रिप्ट लिख के बीच में अलर्ट लिखेंगे, अगर पॉपअप आता है तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। मुझे बस इतना ही मैंने सीखा था और मैं सीधा चला गया था बकराउट पे हंट करने। ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, इस तरह मिल भी जाए तब भी किसी काम का नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ दिस थिंग वर्क्स एंड व्हाट हैपेंड, राइट। एंड पहली बात तो अगर इतना नॉलेज है तो मिलेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज, अगर हम लोग उसका रूट कॉज समझेंगे कि क्या करने से ये चीज अराइज होती है,
किस तरह की कंडीशंस में ये हो सकती है, इसका इम्पैक्ट क्या है, देन विल बी एबल टू लाइक फाइंड इट। अब अगर मैं बस इतना समझ लूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन में मैं ऐसे टाइप करूंगा और अगर एरर आ गया तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन है, देन दैट्स यूजलेस। व्हाई? क्योंकि अब समझ लो कि जैसे मैंने आपको एक इसका एग्जांपल दिखाया लॉगिन का। अब एसक्यूएल इंजेक्शन ऑब्वियसली वी कैन अज्यूम कि एसक्यूएल इंजेक्शन कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, लाइक वी कैन से कहाँ पे एग्जीक्यूट और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम, जहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज किया जा सकता होगा। एसक्यूएल का यूज जनरली हम लोग कहाँ कहाँ एज्यूम कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन में, लॉगिन में, रजिस्टर में, कोई भी कॉन्टैक्ट का फॉर्म है जहाँ पे डेटा जा रहा है, ऐसी जगहों पे जनरली एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज किया जा सकता है कि लाइक जो भी क्वेरीज हमने एंटर किया उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए या तो वहां से फैच करने के लिए। करेक्ट? सो अगर मुझे ये सब चीजें पता होगी तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ यहाँ पे लॉगिन पेज है, देन ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन। So this is why understanding the root cause of the vulnerabilities is very important. So like when you are learning web application testing, then don't like rush मत करो उस वक्त कि कब सीख लूँ, कब हंटिंग स्टार्ट करूँ या फिर कब टेस्टिंग स्टार्ट कर लूँ। धीरे धीरे टाइम लो, एक एक वल्नरेबिलिटी को टाइम दो, क्योंकि ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था ये सेम मिस्टेक मैंने की थी, बट ऑब्वियसली वहाँ पे डीमोटिवेशन ही मिलेगा क्योंकि ना वल्नरेबिलिटी मिलेगी ना ही बग बाउंटी में कुछ मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज। सो कभी भी ये चीज सीख रहे हो देन रश मत करना, आराम से सीखो, एक एक वल्नरेबिलिटी को टाइम दो। And when you're confident enough that yes, I know each and everything about this vulnerability, how this arises, what is the impact, how can I exploit it, how can I bypass the firewall in this vulnerability, then you can shift to the next vulnerability. If you follow this method, it will be like I can guarantee you that you will become like great bug bounty hunter, or we can say web application penetration tester. But yeah, patience is the key. You'll have to like learn and have patience. All right, so let's move on to the next vulnerability, which is cross-site request forgery. Now, it is considered tricking user into submitting malicious requests to a web application without their knowledge. Now, this is an interesting vulnerability. So, anyone, किसी को idea what is cross-site request forgery? Okay. Anyone else? You can turn on your mic if you like have the answer, or you can type it in the chat box. Alright, and I think no one has idea about that vulnerability. Okay, no issues. I'm here to explain. So, cross-site request forgery is basically a vulnerability where will trick the user to click a malicious link, which generally causes कि जो भी उसका यूजर नेम है या फिर उसका अकाउंट की कोई भी डिटेल है वो चेंज हो जाएगी वहाँ पे। एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ वेबसाइट जिसके अंदर प्रोफाइल में ऑप्शन है दैट आई कैन चेंज माय यूजर नेम और माय ईमेल एड्रेस। ओके, फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ वेबसाइट xyz.com। मैं उसके प्रोफाइल में गया, in the profile section I have option to change my email. Okay, sorry, let me type it correctly. Okay, email. Okay, so for an example, like I changed my current email to smithrami@gmail.com. So after like entering this email and forwarding my request, what will happen is sometimes website make these kind of requests like https colon slash slash xyz, sorry, xyz.com slash change email, and there will be one parameter called email or whatever, and this will have my email written here. Okay, so don't click on this link, it won't work obviously.
it won't work. All right, so this is a basic example. So like for an example, understand that अगर मैं मेरा ईमेल चेंज करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह की एक लिंक बनेगी और वो मतलब मेरी रिक्वेस्ट इस तरह से जाएगी, गेट रिक्वेस्ट. If my data or my values, whatever I enter, is being transferred into the URL itself, then it is considered get request. Right, so this is a get request of changing email. So for example, now you have the account on the same website xyz.com. I send you this link, or we can say I shorten the link so you can't even see the this email written here. Okay, when you click on the link, what will happen? You will also send the get request to the same URL. So now, if the website has no CSRF token, or we can say proper protection implemented, then your email will be also changed to smithrami@gmail.com. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जैसे समझ लो कि अब आपका कोई भी अकाउंट है, मैं आपका लाइक आपका अकाउंट लॉग्ड इन है अभी. अब जो रिक्वेस्ट मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मेरे अकाउंट का जो ईमेल है उसको मुझे इससे चेंज करना है. अगर यही सेम रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे और उनके वहां प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो आपके अकाउंट का ईमेल ये हो जाएगा. देन आई कैन जस्ट लाइक डू द फॉरवर्ड पासवर्ड थिंग एंड गेट योर अकाउंट. Okay, so this is the CSRF vulnerability. I hope I am clear right now. Any doubts? We'll also see the practical of these vulnerabilities, so you won't have like any doubt. Okay, but as of now, am I clear or I should repeat this? All right. Okay, perfect. Okay, let's move further to the next slide. Okay, so now let's understand some prerequisite for web application penetration testing. So now, obviously, before we start learning the vulnerabilities or the bug bounty hunting, there are some prerequisite which we are supposed to learn. बहुत से लोग से ये एक और मिस्टेक है, काफी लोग करते हैं ऐसा, सीधा उनको लाइक साइबर सिक्योरिटी का बेसिक नॉलेज, दे गेन सम बेसिक नॉलेज अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड दे डायरेक्टली स्टार्ट लर्निंग वल्नरेबिलिटीज, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन एटसेट्रा. This is a huge mistake which you can like we can say one of the worst mistake which you can make for like learning or while learning the web application testing or whatever, like any kind of penetration testing in like in the field of cybersecurity. Why? Now let's understand. अगर मुझे like वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होगा, अगर मुझे बैकएंड के बारे में पता होगा, in that case I'll be able to like understand the working, ये काम किस तरह कर रहा है. Now let's see this with another example. Okay, is there anyone here who knows PHP? किसी को PHP आती है यहाँ पे? PHP language. A bit. Okay, that's fine. So now for an example, if a website is working, or we can say a website is made of PHP language, then if I know PHP, then I will be able to imagine that if this function, or if this is the function, then what could be the backend code of this specific function, how this function could be working, what could be the mistakes that the developer could have made while making the website. राइट, फॉर एग्जाम्पल लाइक PHP के अंदर, जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दिखाता हूँ, लाइक आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंपल PHP कोड ऑफ, sorry, let me just or we can say let's just store the name in $_get. I'll explain the code, don't worry. If someone have like if
anyone here who is not able to understand, then don't worry, I'll be explaining the code that what I am like typing here. And then let me just print it. Now, this is a code for like we can say there are lots of websites जिसके अंदर क्या होता है कि हम ना URL के अंदर यहाँ पे कुछ भी जो टाइप किया होता है वो स्क्रीन के ऊपर दिखता है. फॉर एन एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. कोई भी रैंडम वेबसाइट का कोई नाम लो, एनी रैंडम वेबसाइट जिसके ऊपर हम लोग ये बस डेमोन्स्ट्रेशन सिंपल सा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं. Okay. Yes, we have the search option here. That's perfect. Let me just search for Smith. Okay, we are able to see the search results for Smith here. So what if I change this here? For an example, I'm changing this to like 1 2 3 4, and it will be changed to the 1 2 3 4 here, right? Yes, it is changed. Sometimes we also get a text called search results for 1 2 3 4 in some websites. Okay, that's not the case here, but in so many websites, if we change the value in the like you can say the get request, then it will be reflected in the website or web page itself. So this is the place where cross-site scripting vulnerabilities, which we learned a few minutes ago, can appear. How? Let's understand. Now for an example, समझ लो कि यहाँ पे search option है. अगर मैं यहाँ पे script type करता हूँ, obviously यहाँ पे तो नहीं होगा because okay, I think something went wrong here. Let me just type something normal. Okay, so now for an example, if the website is printing like something like this here, then in that case, जैसे समझ लो कि अगर मैंने URL के अंदर स्मिथ लिखा है तो यहाँ पे it should print Smith itself. If I'm typing or like importing a something code, we can say like image code, then few websites, if they don't have enough protection implemented, they'll also consider this instead of text, they'll consider this as a source code or we can say code. Then it will execute the code. So now if like for an example, ये चीज काम किस तरह करेगी वो मैं समझाता हूँ. अगर ये लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है नीचे वेबसाइट के अंदर, देन ऑब्वियसली ये चीज सोर्स कोड के अंदर भी होगी. सो अगर सोर्स कोड के अंदर टेक्स्ट आ रहा है उसके जगह यहाँ पे मैं कोड लिख दूँ तो सोर्स कोड जो उसका वेबसाइट का होगा उसके अंदर वो कोड ऐड हो जाएगा. अगर उनके पास इनफ प्रोटेक्शन नहीं होगा इम्प्लीमेंटेड तो वो कोड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क्स, राइट. सो ये सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है. सो गेट रिक्वेस्ट के अंदर एक यूजर नेम नाम की फील्ड है, जैसे हमने अभी लाइक सर्च करके आई थिंक था फील्ड का नाम. इन दिस केस देयर इज अ फील्ड कॉल्ड यूजर नेम. ओके, यूजर नेम के अंदर अगर मैं स्मिथ लिखूंगा देन इट विल प्रिंट द नेम एज इट इज. जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्मिथ लिखा तो फॉर एन एग्जांपल दिस इज आवर वेब पेज, वहां पे लिखा होगा स्मिथ. अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखूंगा तो यहाँ पे लिखा आएगा 1 2 3 4. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक कोड लिख दूं, ओके, तो यहाँ पे भी अगर उनके पास इनफ प्रोटेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ ही आएगा एंड कोड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, राइट. इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट इट विल कंसिडर इट एज अ कोड. सो इतना इनफ प्रोटेक्शन होना चाहिए. एंड दिस इज द लाइक वीकनेस इन दिस कोड कि मैंने सीधा क्या किया यहाँ पे फैच करवा दिया जो भी लाइक अपना उसमें गेट रिक्वेस्ट में जो भी यूजर नेम के अंदर वैल्यू है, ये क्या कर रही है ये लाइन, ये जो यूजर नेम नाम का यूआरएल में होगा उसके अंदर मैंने जो भी लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे फैच कर देगा उसको, मतलब रिट्राइव करेगा. एंड सेकंड में इको से क्या किया मैंने उसको प्रिंट. फर्स्ट स्टेप जो भी यूआरएल के अंदर वैल्यू है उसको लो, सेकंड में प्रिंट कर लो. अब यहाँ पे मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया कि उसको फिल्टर आउट करो, चेक करो कि वो कोड है या फिर ऐसी कोई सस्पिशियस क्वेरी है या नहीं. मैंने सीधा लेके उसको एज इट इज प्रिंट करवा दिया. अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करता कि इसको फिल्टर आउट किस तरह करना है एंड एवरीथिंग, उसके बाद प्रिंट करना है, देन वहां पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन रहता एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अराइज नहीं होता. बट इन दिस केस
I haven't implemented any kind of protection here. मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, fetch किया and print कर लिया. So it will be causing the cross-site scripting attack here. So this is the value कि आप अगर आपको पता होगा बैकएंड किस तरह काम कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये वल्नरेबिलिटी किस तरह अराइज हुई, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड इसको बाईपास करने के कुछ ट्रिक्स भी आपके दिमाग में आ सकती है, या फिर आप इमेजिन भी कर सकते हो कि उसने क्या क्या मिस्टेक्स कर सकता है एज अ डेवलपर, उसने क्या मिस्टेक ऐसी कर रखी होगी इस स्पेसिफिक फंक्शन में, राइट। सो अब देखो ऑब्वियसली अगर ये फंक्शन है, अब लॉगिन का कोई फंक्शन है, सो कोड 90% सिमिलर ही होगा, उसने थोड़ा बहुत अलग रखा होगा, बट अगर मुझे लैंग्वेज आती है प्रॉपरली तो मुझे पता होगा कि कोड ऑलमोस्ट यही होगा, राइट। सो आई कैन ऑल्सो इमेजिन कि अगर ये कोड हो सकता है तो उसमें ये जगह है जहाँ पे प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत है, यहाँ पे इसने मिस्टेक कर रखी होगी शायद से। So we can we can assume easily that उसने कहाँ पे मिस्टेक कर रखी होगी और कहाँ से हम लोग को वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है। सो दिस इज द रीजन कि आपको टेक्नोलॉजी सीखने की नीड क्यों है, राइट। ये चीजें आपकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की टेक्निक्स को काफी ज्यादा इजी कर लेती है जब आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में आइडिया होता है। सेकंड इज ओवर्स टॉप 10। नाउ ओवर्स टॉप 10 क्या है, किसी को आइडिया है? एनीवन? Top 10 vulnerabilities. Okay, that's correct. So OWASP is we can say an organization or a group which releases a top vulnerability list every few years. Okay, so there's a OS which is called OS top 10 list. So अगर for an example recent जो 1-2 साल में जो भी लिस्ट आई है, so अगर उसके अंदर क्या होगा, उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस किए होंगे कि इतने टाइम ड्यूरेशन में जो हमारी लास्ट लिस्ट हमने लॉन्च की थी उसके बाद से आज की डेट तक में कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज है टॉप 10 जो सबसे ज्यादा मिली है, वो क्या करेंगे उसकी एक लिस्ट बना के लॉन्च करेंगे। अगर हम लोगों को फिर उस चीज से पता चलेगा कि हाँ ऑब्वियसली ये वल्नरेबिलिटीज कॉमन है, अगर हम वो सारी कॉमन वल्नरेबिलिटीज सीख लें देन ऑब्वियसली वी हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ फाइंडिंग these vulnerabilities into the actual websites because काफी ज्यादा रिसर्च करके ये लिस्ट लॉन्च की जाती है कि कौन सी टॉप या फिर कौन सी सबसे कॉमन वल्नरेबिलिटीज है। सो अगर हम वो वल्नरेबिलिटीज सारी सीख ले सबसे टॉप वल्नरेबिलिटीज देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो कॉमन है देन काफी सारे वेबसाइट्स में होगी भी वो, उसके मिलने के चांसेस भी ऑब्वियसली हाई है। All right, so let's move on to the next topic, which is tools and setup. So invest in tools है worksuite, OWASP and set up secure testing environment. So आपको tools सीखने पड़ेंगे उससे पहले worksuite क्या होता है, OWASP क्या होता है, GoBuster है, and there are lots of tools. Information gathering के लिए and exploitation के लिए, vulnerability analysis के लिए बहुत सारे tools होते हैं which we are supposed to learn when we go for web application testing or any kind of penetration testing or even ethical hacking। कोई भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर डोमेन है, हमको प्रॉपर टूल्स पहले सीखने पड़ेंगे किस तरह यूज किया जा सकता है, कौन से केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं उसको, उसका क्या क्या यूज हो सकता है, राइट। वो चीजें हम सीखेंगे तभी हमको पता भी चलेगा कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है तो इसकी यहाँ पे मुझे कौन से टूल की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ओके, सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। So after all these things, let's understand about some learning resources for you if you are going to learn web application testing. First is Portsfigure Web Security Academy. This is we can say one of the best options for you when you are going to learn web security.
because sports figure, like anyone have idea about what is sports figure? Let me just log in here. Okay, this is the sports figures website. Let me just paste this into the chat, so if anyone else want to use it, like save it somewhere. It is one of the best options for you if you are like if you want to learn web application testing. So for now, let's go to the like that specific website. So as I said, Portsfigure Academy is one of the best option. Why? Let's see, like Portsfigure Academy basically यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हमको कंटेंट मिल जाता है about web security. Portsfigure is a, like, let me clear, Portsfigure is parent company of the tool called Burpsuit. सो वर्कसूट जो टूल है उसके पेरेंट कंपनी है पोर्ट्स फिगर. सो इनके यहाँ पे लाइक हमको ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के आज के टाइम पे भी जो भी लाइक लेटेस्ट टॉपिक्स है वो इसके अंदर अपडेट होते रहता है एंड वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू लर्न हियर. ओके, आई थिंक देयर आर सम नेटवर्क इश्यूज फ्रॉम माय साइड. इज माय स्क्रीन विजिबल? हेलो? Okay, it is visible. Then what's the problem in this one? Okay, it's done. Okay, so here are all the topics for like web security which you can learn in this. So there are lots of topics, lots of labs in Portsfigure, and this all these labs and all the topics are totally free. So you can learn like these topics, other like we can say so many vulnerabilities and everything here. So this is why this is one of the resource which you can use to like learn web application testing. And like when we go for the demonstration part, they will be like like we can say I can कि जैसे अगर हम लोग अब जैसे डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग इसी लाइक वेबसाइट का यूज करेंगे फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन. Okay, so for now let's continue our PPT. So next option is hack the box. Obviously hack the box के बारे में काफी लोगों को आइडिया होगा. Hack the box is also a good option when you want to like learn web application or any other topic in like cyber security. Okay, and for hands-on practice you can like we can say you can participate in CTFs which are capture the flags competition. Like anyone have idea of what is CTFs? Yes, so CTF stands for capture the flag. So in capture the flag, like there is a challenge. There's a flag hidden in the system. You'll have to find the vulnerabilities in the system or the website in order to exploit it and find the hidden flag. Whoever finds the flag first wins the CTF. This is a simple logic. वेबसाइट एप्लीकेशन जो भी है उसको हैक करो, उसके अंदर जो भी लाइक फ्लैग है उसको एज सुन एज पॉसिबल रिट्राइव करो और फिर आई और वी कैन से ले लो वो फ्लैग एंड जो सबसे पहले फ्लैग लेगा वो जीत गया. दिस इज द लाइक लॉजिक एंड द capture the flags. So yes, capture the flag is one of the like good methods which you can like get to have practical experience in bug bounty hunting or web application testing. Then next is bug bounty programs. Obviously, there are lots of bug bounty programs out there. Don't focus on like finding vulnerabilities or getting the bounties. Just go to the website, do the practice of reconnaissance, practice of identifying the vulnerabilities. लाइक जैसे लाइक अपना माइंड का धीरे धीरे टेस्टिंग करो. जैसे मैंने बोला हम लोगों को प्रोग्राम्स में जाके सीधा ऐसा नहीं है कि अभी से अगर हम सीख रहे हैं तो सीधा जाके वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने लगे या फिर सीधा सब डोमेन्स निकालने लगे, सीधा इंफॉर्मेशन गैदरिंग. अभी जैसे मैंने बोला हम लोग टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है उसके लिए कि बैक एंड किस तरह काम करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सीख रहे हो कोई भी एक रैंडम वेबसाइट में जाओ, उसको एनालाइज करो. हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड इन द वेबसाइट. उसके ऊपर से थोड़ा बहुत अपने माइंड में उसका मैप बनाओ.
ये वेबसाइट किस तरह काम कर रही है, किस तरह इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, राइट। ये चीजें एज ऑफ लाइक बग बाउंटी हंटर या फिर एज अ वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर, जब हम लोग एक्चुअली टेस्टिंग करते हैं तब भी ये सेम चीज हमको करनी पड़ती है। हम लोग सीधा सब डोमेन्स निकाल के, सीधा डायरेक्टरीज निकाल के, या फिर सीधा लाइक वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें सारी टेक्नोलॉजीज, उनके वर्किंग, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस है, वो सबको देख के एक प्रॉपर माइंड के अंदर उसकी इमेजिनेशन बनानी पड़ती है कि इस लैंग्वेज के अंदर ये बनी हुई है और इस तरह का यहाँ पे फंक्शन है, तो इसका ये लॉजिक होगा, इसका इस टाइप का कुछ कोड होगा, इसके अंदर ये मिस्टेक्स हो सकती है। ये हर एक चीज एनालाइज करने के बाद हम लोग आगे के स्टेप्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए। सो अभी के लिए बस इतने स्टेप्स करो, जाओ फंक्शनैलिटीज देखो, पहले उनको नोट डाउन करो क्या क्या फंक्शनैलिटीज है। सेकंड स्टेप, फिर से जाओ उसी वेबसाइट में, वो जो फंक्शनैलिटीज है उसके साथ देखो कौन सी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। अगर वो टेक्नोलॉजी लाइक कुछ टेक्नोलॉजीज आई कैन लाइक टेल नाउ विच इज लाइक जावा एंड पीएचपी। जावा भी लाइक काफी कम यूज होती है, बट हाँ पीएचपी काफी सारे वेबसाइट्स में यूज होती है बैकएंड के लिए। एंड दिस इज अ इजी, PHP is a easy one, so you can start learning from PHP। PHP सीखो, ऐसी वेबसाइट्स में जाओ जो PHP से बनी है, उनके फंक्शंस देखो, ओके, उनको नोट डाउन करो। देन लाइक मेक अ मैप इन योर माइंड, मेक अ चार्ट इन योर माइंड कि ये फंक्शन किस तरह बना हुआ होगा, PHP में क्या लॉजिक लगा के। अगर हम मुझे पता है, मुझे PHP आती है, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि PHP लैंग्वेज के किस तरह के कोड से ये सेम लाइक फंक्शनैलिटी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। सो वो चीज हमको करनी है यहाँ पे। अगर वो चीज करोगे देन इट विल बी लॉट इजियर फॉर यू टू फाइंड द वल्नरेबिलिटीज। सो प्रैक्टिस करने के लिए जब भी जाओ सीधा वल्नरेबिलिटीज फाइंड मत करो, धीरे धीरे स्टेप्स लो, धीरे धीरे सीखो, देन गो फॉर द एक्चुअल टेस्टिंग एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द वल्नरेबिलिटीज। नेक्स्ट इज बिल्ड योर ओन लैब। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखा था 2-3 लाइन का PHP का, ऐसे ही कोई भी बैकएंड की टेक्नोलॉजी सीखो, एक छोटा सा लोकल होस्ट में वेब सर्वर बनाओ और उस पर अपने तरीके से खुद कोड करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। ये जो दोनों ऑप्शन है, दोनों से अच्छा है तीसरा ऑप्शन। टाइम कंज्यूमिंग है पर बेस्ट है। अगर आपको सीखना है वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, खुद कोड करो। जब खुद कोड करोगे तो पता चलेगा मैंने क्या मिस्टेक की थी, इससे ये वल्नरेबिलिटी आई। ये सेम मिस्टेक कोई और भी कर सकता है, राइट। अगर आप समझ लो कि जैसे कोई वेबसाइट में लॉगिन फंक्शन है, ठीक है, और वो PHP में बनी हुई है, अगर तुमने पहले प्रैक्टिस करते वक्त तुमने भी PHP में खुद एक लॉगिन पेज बनाया, वर्किंग लॉगिन पेज PHP में, तो तुमको पता है कि तुमने क्या कोड यूज किया था, किस तरह मेथोडोलॉजी यूज की थी, किस तरह का माइंडसेट था, प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें की थी। अगर ये चीज तुमको पता है, तुम ये भी अज्यूम कर सकते हो कि जो भी डेवलपर है जिसने ये वेबसाइट बनाई है उसने भी तो PHP में बनाई है, उसका भी माइंडसेट थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, कोड भी जैसे तुमने बनाया था थोड़ा बहुत वैसा ही होगा। उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, यू कैन इजीली assume, राइट। सो दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो बिल्ड योर ओन लैब्स, बट उसके लिए वही है टेक्नोलॉजीज वगैरह सीखनी पड़ती है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जस्ट सीख लो टेक्नोलॉजीज, डायरेक्टली जंप मत करो ऑन द हंटिंग इटसेल्फ। Now, authentication vulnerabilities. So, like there are weak password policies, multi-factor authentication bypass and session management flaws. अब ये like ऐसी vulnerabilities है जो काफी लोग इन पे ध्यान नहीं देते, authentication and authorization vulnerabilities पे। Now, before going like further with the PPT, कोई मुझे बता सकता है कि what is the difference between authentication and authorization? बिकॉज ये काफी जगहों पे ऐसा लाइक देखने को मिलता है, ये टर्म कंफ्यूजिंग हो जाता है काफी लोगों के लिए। काफी लोग ये भी समझते हैं कि दोनों सेम है, बट नहीं, काफी फर्क है दोनों में। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड व्हाट इज ऑथराइजेशन? एनीवन? Authenticate means the info is correct. Yes, you are partially true. In simple words, we can say authentication is proving our identity. ओके, नाउ फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं स्मिथ हूँ, किसी वेबसाइट को मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं स्मिथ हूँ, मेरे पास उसका यूजर नेम, ID, पासवर्ड जो भी है
वो होना चाहिए टू प्रूव दैट हाँ मैं ही स्मिथ हूँ, राइट। अगर मैं किसी को भी जाके बोल दूंगा मैं नरेंद्र मोदी हूँ, ऑब्वियसली नहीं मानेगा कोई, राइट। आपके पास कुछ तो उसका प्रूफ होना चाहिए। यस, करेक्ट। सो दैट्स द सेम एग्जांपल कि अगर वेबसाइट है, वेबसाइट में जा रहे हैं हम, वहां पे हम हमारी आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, ऑथोराइजेशन इज परमिशन ऑफ, हाँ। तो जहाँ पे हम लोग फर्स्ट थिंग, लेट मी क्लियर द ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे हम लोग हमारी आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। इफ आई एम सेइंग दैट आई एम स्मिथ रामी, देन आई हैव टू प्रूव दिस, दैट यस आई एम स्मिथ रामी, where I am proving myself that yes I am the person which I am like supposed to be, or we can say जो मैं claim कर रहा हूँ कि मैं हूँ, अगर मैं वो prove कर रहा हूँ, which is that is called authentication. And in the authorization it is कि मेरे पास मेरी identity proved है, अब मेरे पास क्या क्या authorities हैं वो check करना, which is called authorization. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, कॉलेज रहते हैं हमारे, कॉलेज में समझ लो कि एक रूम है जो सिर्फ एचओडी सर और जो भी लाइक हायर अथॉरिटीज है उनके लिए, राइट। सो वहां पे अगर हम जाके लाइक अपनी आइडेंटिटी प्रूव हमने कर ली कि हाँ मैं जो भी स्मिथ हूँ और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं उस रूम में जाने का ट्राई करूंगा जो उन हायर अथॉरिटीज के लिए, तो वहां पे मुझे रोक दिया जाएगा कि नहीं, आप अभी स्टूडेंट हो और ये जो रूम है वो हायर अथॉरिटीज के लिए है। वो क्या हुआ, ऑथोराइजेशन, कि वहां पे मेरी आइडेंटिटी प्रूव्ड है, उनको पता है मैं स्मिथ हूँ, मेरी आइडेंटिटी वहां पे प्रूव्ड है, पर मेरे पास क्या क्या अथॉरिटीज है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, कौन से रूम में जा सकता हूँ कहाँ नहीं जा सकता, वो चीजें, दोज थिंग्स आर कॉल्ड ऑथोराइजेशन। Okay, so authentication, now let's come to the vulnerabilities. Authentication vulnerabilities वो होती है जिनमें आप कुछ भी फ्लॉ निकालते हो उन फंक्शंस में जो आपकी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, जैसे लॉग इन रजिस्टर है या फिर ऐसे कोई फंक्शन में वहां पे आप उसको बाईपास कर दो, या फिर वहां पे कोई ओटीपी लीकेज फाइंड करो कोई भी, तो वो कंसिडर होता है ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज में, जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हो उस पार्ट में अगर आप कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो, देन दोज वल्नरेबिलिटीज आर कॉल्ड ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज। नेक्स्ट इज ऑथोराइजेशन, जैसे फॉर एन एग्जांपल की लाइक एक बैंक की वेबसाइट है, ऑब्वियसली आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ कि हाँ मैं स्मिथ हूँ, मेरे पास मेरा अकाउंट है एंड एवरीथिंग। अब अगर मैं किसी और के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने का ट्राई करूँ, किसी और के अकाउंट का यूज करते हो उसके बैंक अकाउंट से पैसे कहीं ट्रांसफर करने का ट्राई करूँ, ऑब्वियसली आई वोंट बी एबल टू, क्योंकि मेरे पास उतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी और का अकाउंट यूज करके या फिर किसी और के बैंक अकाउंट से पैसे ले सकूं, ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी। तो उस केस में वहां पे उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ, ऑथोराइजेशन, मतलब वो चीज ऑथोराइजेशन है। अब अगर मैं कोई भी ऐसा लाइक बाईपास यूज करके या फिर कोई भी टेक्निक लगा के कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ जिसकी परमिशन मेरे पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन वल्नरेबिलिटीज। जैसे इंस्टाग्राम है, मैं अपना यूजर नेम चेंज कर रहा हूँ स्मिथ, तो मैं अपने ही अकाउंट का यूजर नेम चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ भी वहां पे टेक्निक यूज करके किसी और के अकाउंट जिसका मेरे पास एक्सेस नहीं है उसका भी यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर पा रहा हूँ, उसकी कोई डिटेल चेंज कर पा रहा हूँ, कुछ भी, इन शॉर्ट ऐसा कोई ऑपरेशन जो मेरे पास परमिशन नहीं है करने का, अगर वो मैं कर पा रहा हूँ, देन दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन वल्नरेबिलिटीज। सो एनी डाउट्स? हेलो? Okay. All right. Clear. Then, so these are the authentication vulnerabilities. First is weak password policies. Easy to guess password allow attacker to brute force logins. राइट, अब अगर पासवर्ड आपका जो भी है वो इजी टू गेस है, काफी सिंपल सा पासवर्ड है, देन इट कैन बी इजीली लाइक इट कुड बी गेसेबल, कोई भी उसको गेस कर सकता है इजीली, या फिर उसको ब्रूट फोर्स करके आपके सिस्टम के अंदर या फिर आपके अकाउंट के अंदर लॉग इन कर सकता है। सो दिस इज द वल्नरेबिलिटी ऑफ ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे आइडेंटिटी प्रूव करनी है वहां पे ये वीकनेस है, राइट, कि आपका आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए जो पासवर्ड है वो वीक है। सेकंड इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बायपास। ओके, सो किसी को 2FA या MFA का आइडिया, व्हाट इज 2FA और व्हाट इज MFA?
Anyone टू what फैक्टर is 2FA? एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, जैसे गूगल पे होता है कि आपको टू वेज लाइक मोबाइल नंबर से भी और लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी हम ईमेल के थ्रू आती हैं, तो ये टू वेज ऑथेंटिकेशन होगी. Okay, exactly. So, for example, to make sure that we know something, we have something to validate. Okay, I am confused here. Like I didn't understand what are you saying, but the simple let's understand this is in a like this in a simple term. फॉर एन एग्जाम्पल मैंने किसी भी वेबसाइट पे लॉग इन किया, मैंने यूजर ने पासवर्ड डाला, वो करेक्ट है, देन फर्स्ट लाइक जैसे देखो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब फैक्टर का क्या मतलब होता है, तरीका, और वी कैन से अ वे. एक सिंपल एग्जांपल में इस वाले लाइक सिनेरियो में कि मैं बात कर रहा हूँ, तो फॉर एन एग्जांपल मेरा जो मेरी आइडेंटिटी प्रूव करने का एक फैक्टर है कि मैं अपने यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करूँ. सेकेंड फैक्टर इज ओटीपी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन. जैसे अगर मैंने अपने यूजर नेम पासवर्ड्स करेक्ट टाइप किया, अगर गलत किए तो वो तो फिर कोई चांस ही नहीं है, वो वहीं से मना कर देगा. अगर मैंने सही यूजर नेम और पासवर्ड लिखा है तब भी देयर इज अ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी व्हिच इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. और अनदर फैक्टर कि जैसे अगर मैंने यूजर नेम पासवर्ड सही लिखा है तब भी वो एक ओटीपी सेंड करेगा मेरे रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पे. सो अगर मैंने किसी का यूजर नेम पासवर्ड स्टील कर लिया और मैं उसके थ्रू लॉग इन करूंगा तब भी मेरे पास वो ओटीपी नहीं आएगा एंड आई वोंट बी एबल टू लॉग इन. दिस इज कॉल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो ये वल्नरेबिलिटीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में भी पहले लाइक एक दो बार मिली हुई है, जिसमें उन्होंने 2FA बाईपास किया था कि लॉगिन पासवर्ड वो करेक्ट कर लिया उन्होंने, एंड 2FA जो था वहां पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो उन्होंने बाईपास कर लिया था. So these are some vulnerabilities of authentication. कि मतलब 2FA बाईपास करने का मतलब क्या है कि जैसे लाइक वो ओटीपी सेंड करता है या फिर कुछ भी सेकंड स्टेप लेता है, एक्स्ट्रा स्टेप आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, उसको बाईपास कर देना, बिना वो स्टेप वेरीफाई किए डायरेक्टली लॉगिन करना. दिस इज कॉल्ड 2FA बाईपास और MFA बाईपास. Session management flaws. Attacker can hijack session and impersonate legitimate user. Obviously, मैं किसी की भी टोकन या फिर जो भी लाइक सेशन टोकन है, कुकीज है, वो मैं ले सकता हूँ एंड आई कैन प्रिटेंड टू बी दैट पर्सन. उसके अकाउंट से लॉग इन कर सकता हूँ, जैसे हमने पहले बात की थी. राइट, कुकीज आर द वे जो लाइक वेबसाइट जनरली यूज करती है यूजर को लाइक आइडेंटिफाई करने के लिए. सो अगर मैं किसी और की कुकीज यूज कर लूँ देन ऑब्वियसली. Okay, let me just close this. Okay. Now let's move on to the authorization vulnerabilities. So authorization vulnerabilities here are IDOR, insecure direct object reference. Now this is an interesting vulnerability. Anyone have idea about what is IDOR? Anyone? Okay, no issues. So let me clear the IDOR by myself. So IDOR is called insecure direct object reference. इसका पहले तो मैं मतलब समझाता हूँ कि हाँ, now like for an example there is a unique identifier for every user or every service or whatever thing. अगर किसी like there are lot of things, जैसे अब स्मिथ जैसे मेरा नाम है, तो स्मिथ नाम के समझ लो 10,000 यूजर हैं, एक ही वेबसाइट में स्मिथ नाम के 10,000 यूजर्स हैं. उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला स्मिथ यहाँ पे हमसे कम्युनिकेट कर रहा है? They'll use a unique identifier, right, which we also call object reference, कि जो एक ऑब्जेक्ट है, जो एक नाम है, जो एक पर्सन है,
उसको रेफर करता हुआ एक कोई चीज, जिसको हम लोग जनरली वेबसाइट के अंदर यूज होती है इसके लिए आईडी, यूजर आईडीज, राइट। एंड कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है लाइक वो ना, जैसे यूजर नेम का लाइक यहाँ पे फंक्शन रहता है, सेम यूजर नेम दो लोग यूज नहीं कर सकते, राइट। सो ओके, सो बेसिकली लाइक वी कैन से कि लाइक सेम यूजर नेम जो होता है वो मल्टीपल पीपल यूज नहीं कर सकते हैं। वाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर सेम यूजर नेम के मल्टीपल यूजर्स रहेंगे, उनके सामने ये यूजर नेम के दो मैसेज आएंगे, अब उनको कौन कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे वो यूज करते हैं आईडी। अगर नाम सेम है तब भी आईडी मेरी वन होगी, जो सेकंड वाला उसकी टू होगी। अब आई डॉट बेसिकली क्या होता है कि जैसे समझ लो कि मैं किसी वेबसाइट में अपना यूजर नेम चेंज कर रहा हूँ, यूजर नेम मैंने चेंज किया तो उसकी एक रिक्वेस्ट आएगी कि यूजर नेम लाइक हमको चेंज करना है ये, और उसके साथ नीचे लिखी होगी आईडी जिसमें लिखा हुआ टू, टू इज माय यूजर आईडी। अब अगर मैं बॉक्सूट से इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करके टू को मैं कन्वर्ट कर दूं वन में, एंड अगर यूजर आईडी वन वाले का यूजर नेम चेंज हुआ देन इट इज कॉल्ड आईडो। ये रिक्वेस्ट क्या कर रही है? बस नॉर्मल यूजर नेम को इस पे चेंज करना है। किसका करना है चेंज? तो आईडी इज इक्वल टू टू, मतलब जिसकी यूजर आईडी टू है उसका यूजर नेम ये करना है। अगर मैं इसको टू की जगह कुछ और कर दूं, किसी और की यूजर आईडी, एंड अगर उसका यूजर नेम चेंज हो जाता है देन दिस इज कॉल्ड आईडो। Okay, then next is bypassing access control. Circumventing security controls to access restricted functionalities. जैसे कोई भी restricted directories है, जैसे स्लैश एडमिन है, अगर वो ऑब्वियसली मेरे पास उतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं एक्सेस कर पाऊँ, बट इफ आई एम एबल टू एक्सेस इट देन दिस इज कॉल्ड bypassing access control. Exploiting role-based access. Leveraging flaw in role-based access control to gain unauthorized access. इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं एक नॉर्मल यूजर हूं एंड मैं कोई टेक्निक यूज करते हुए अपने आप को कन्वर्ट कर पा रहा हूं एडमिन में, देन ऑब्वियसली आई हैव ऑल द एडमिन कंट्रोल्स, राइट। जैसे काफी वेबसाइट्स में लाइक वो फीचर रहता है एडमिन का रजिस्ट्रेशन का अलग पेज होता है, एडमिन अकाउंट लॉगिन करने का और रजिस्ट्रेशन करने का। अगर मैं so that's the exploiting like role based access. Next is business logic vulnerabilities. Business logic in simple terms इसका मतलब होता है बैक एंड। बिजनेस लॉजिक vulnerabilities का मतलब होता है बैक एंड की vulnerabilities, which is called bypassing payment verification. जैसे हम लोग पेमेंट प्रोसेस जो होती है उसको मैनिपुलेट करके जो भी बैक एंड है उसके अंदर छेड़खानी करके, उसके अंदर छेड़छाड़ करके हम लोग कोई लाइक vulnerabilities अराइज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक vulnerabilities. अब्यूज ऑफ एपीआई एंड पॉइंट, जो एपीआई है उसके जो एंड पॉइंट्स है उसके अंदर हम लोग कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, then that is called business logic vulnerabilities. डेटा मैनिपुलेशन, अगर हम लोग कोई भी डेटा मैनिपुलेट कर पा रहे हैं वेबसाइट के बैक एंड का या फिर किसी और यूजर का, दिस इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक vulnerabilities. अगर बिजनेस लॉजिक vulnerabilities मतलब जो बैक एंड है वेबसाइट का उसके अंदर जो भी vulnerabilities रहती है दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक. Like web application pen testing is a crucial skill set for ensuring secure and reliable online application. So basically वही है कि like web application security के अंदर अभी तो बहुत सारे vulnerabilities होती है obviously, and day to day like काफी सारे changes आते रहते हैं, कुछ zero day vulnerabilities आती है, so हम लोगों को regular updated रहना पड़ता है इन vulnerabilities तक, like update रहना पड़ता है, जैसे जिसके थ्रू like हम लोग ये vulnerabilities find कर पाए and websites को secure कर पाए. Now, let's move to the practical part. So, let me just start my Kali machine. In the ports figure, we will learn about a vulnerability. Like we will learn about a practical session of like CSRF. Let's do a practical of it.
CSRF with no defense for now, because obviously like when I'm teaching the basics, I'll have to like move further with vulnerabilities with no restrictions or no protection. Then time by time I can like move to the vulnerabilities which have the protection implemented. There are ways to bypass these protections too, but for now let's just like go for the normal one. Just a second till this is okay. Just hello. Okay, I'm back. So, okay, this is the website. Now let's go to the account section. And यहाँ पे like let me just log in with the credential which are given here. तो ये बेसिकली पोर्ट्स फिगर की वेबसाइट है जो हमने पहले लाइक देखी थी. इसके अंदर ऐसे लाइक लैब्स रहते हैं फॉर डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज. सो दिस इज द लैब फॉर द CSRF वल्नरेबिलिटी जो हमने देखी थी. नाउ लेट्स डू वन थिंग. यहाँ पे ईमेल. Okay, so now it is changed. Okay, so but now हमको यहाँ पे URL के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिखे. देन द सेकंड ऑप्शन हियर इज कि वो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर गई होगी, मतलब जो उसका पैकेट होता है उसके थ्रू गई होगी पोस्ट रिक्वेस्ट के बॉडी में. सो फॉर दैट विल हैव टू यूज द बॉब सूट. सो देखो, अगर गेट रिक्वेस्ट का कोई डेटा है जो यूआरएल के अंदर जा रहा है, देन वी कैन डायरेक्टली एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा फ्रॉम द ब्राउजर इटसेल्फ. पर अगर पोस्ट रिक्वेस्ट का डेटा है, देन विल हैव टू यूज द बॉब सूट. All right. So now we'll have to access the same website from the Bob Suits browser. Okay, it's here now. Okay, done. सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, मतलब हम लोग वो रिक्वेस्ट को देख पाएंगे. अगर मैं यहाँ पे smithramir@gmail.com टाइप करता हूँ, सो नाउ the email will be changed here. Okay, we have the request here. Okay, now I'll just like Bobsuit has the option of like making CSRF POCs. सो उसका यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे POC क्रिएट कर सकते हैं. So for now, like let's see कि जैसे समझ लो कि like we can make a HTML code. Okay, simple. And यही सेम चीज हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हुए भी कर सकते हैं अगर लाइक बॉबसूट का, क्योंकि वो एक इशू है कि जो प्रोफेशनल वर्जन होता है उसके अंदर ही लाइक ये स्पेसिफिक फंक्शन रहता है. सो लेट्स डू वन थिंग. फॉर नाउ लेट्स आस्क चैट जीपीटी टू make a simple CSRF POC template.
it gave me whole code, then it's saying violation now. Okay. Okay, let's do one thing. Let's just take the code from the internet itself. CSRF POC code. Here is the code. Okay, we found it. ओके सो अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा कोड यहाँ पे हमने लिखा है HTML का. सो नाउ हियर द साइट विच विल बी एक्सेसिंग इज दिस वन. इस साइट के मतलब कौन से स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है. सो यहाँ पे हमको वो चीज़ मेंशन करनी है. सो in the site section we will be entering this. Okay, and we have my account and change email. So this is the URL where the request is being sent. Okay, the method is post. Okay, as you can see here, and the value of email parameter is should be, I mean it should be whatever my email is, like smithrami@gmail.com. Now the POC is ready here, and now let's just save it as a HTML file. Okay, now it is converted to the HTML. Okay, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको अभी ऑफ कर देते हैं फॉर नाउ. ओके, नाउ मैं फॉर एन एग्जांपल आई एम द विक्टिम. मेरा अभी ईमेल क्या है, जैसे abc@gmail.com. ओके, दिस इज माय करंट ईमेल. नाउ अब ये जो मैंने फाइल बनाई है, अब अगर इसको लाइक मैं अगर वेब सर्वर पे होस्ट करके किसी को या तो सेंड करता हूँ, या तो मैं खुद ही लाइक इस HTML फाइल को भी किसी को देता हूँ. जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगा, लुक हियर, क्या हुआ, मेरा ईमेल चेंज हो गया मेरे अकाउंट का. अब देखो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, इट इज चेंज्ड. दिस इज कॉल्ड CSRF अटैक. यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बस इस फाइल के ऊपर लाइक मैंने क्लिक किया, वो फाइल मैंने जैसे ही ओपन की, मेरा ये स्पेसिफिक वेबसाइट में जो मेरा ईमेल था वो चेंज हो गया विदाउट लाइक मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं चला. राइट, अगर ये तो हमने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा. अब एक नॉर्मल पर्सन के उसमें अगर वो बस एक फाइल पे क्लिक करेगा और वो वहां पे रिडायरेक्ट होके उसका ईमेल अपने आप चेंज हो जाएगा. Obviously, अगर email मैंने अपना लगा लिया, then I can just use the forgot password functionality and exploit the vulnerability. So this was the demonstration of like CSRF. So like if you want to learn like more vulnerabilities, there are lots of labs and also the like learning content in this Sports Figures website. So you can go there and like learn about these kind of vulnerabilities. They have lots of topics and also the learning path which you can like follow to learn vulnerabilities. So and if you like complete all these labs and all like these learning paths, then yeah, you will have a lot of knowledge about web application testing, or like these much labs and like these learning paths are enough, are more than enough, I can say, to like be a good bug bounty hunter or web application tester. Because like Portsfigure updates their course content every like in a while, in like very few times. So basically that's an advantage for us, and that's all about like web application testing. There are the field is very like depth, and there are lots of things to learn. This is an exciting field, so like yes, you can learn so many things in these fields, or you can say like in these websites. So yeah, that's about this. That's all about this webinar. So अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और इस पर हम वेबिनार को एंड करते हैं यहाँ पे. Which sandbox are you using for running your Kali Linux? I am using the VirtualBox.
Oracle VirtualBox. SSRF SSRF is like another vulnerability जिसके अंदर like क्या होता है basically कि कोई भी like person वेबसाइट के थ्रू किसी को रिक्वेस्ट सेंड करवा सकता है एंड कोई भी एक्सेस ले सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से मैं like क्विकली समझा देता हूँ बिकॉज वी हैव सम टाइम लिमिटेशंस। यस वी हैव सम टाइम लिमिटेशन, सो मैं थोड़ा सा क्विकली बस समझा देता हूँ। एसएसआरएफ बेसिकली क्या होता है कि जैसे समझ लो कि मैं किसी भी पेज पे कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, जैसे लाइक xyz.com/admin, तो ये रिक्वेस्ट कौन सेंड करेगा, मतलब किसके डिवाइस से जाएगी? ऑब्वियसली मेरे डिवाइस से ही जाएगी रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब क्या होगा, ये मुझे ब्लॉक कर देगा बिकॉज आई डोंट हैव द राइट्स टू व्यू द एडमिन पेज। ऑब्वियसली इट विल ब्लॉक मी। अब देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स जिसका यूज करके मैं सर्वर के थ्रू कहीं रिक्वेस्ट सेंड करवा सकता हूँ। सो अगर यही जगह पे मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, अगर रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं सेंड करूंगा तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, जनरली यहाँ पे ब्लॉक। ये सेम रिक्वेस्ट अगर ये सेम रिक्वेस्ट वेबसाइट जो है सर्वर उसका वो खुद ही सेंड करती है, देन वो क्या होगा, उसको इन कर लेगा या फिर वी कैन से एक्सेप्ट कर लेगा। बिकॉज ऑब्वियसली ये परमिशन मेरे पास नहीं है, पर जो सर्वर इटसेल्फ है उसके पास तो परमिशन है। वेबसाइट जो भी ब्लॉक करती है वो अदर यूजर को ब्लॉक करती है, खुद को ब्लॉक नहीं करेगी। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ लाइक SSRF, which is called सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरिंग, जिसके अंदर हम लोग सर्वर के थ्रू कहीं और रिक्वेस्ट सेंड करवाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में, अगर मैं कहीं पे रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो वहां पे मेरा आईपी एड्रेस आएगा और मेरे आईपी से रिक्वेस्ट सेंड होगी, और एसएसआरएफ में मैं सर्वर के आईपी एड्रेस से सर्वर के थ्रू रिमोटली कहीं और लाइक रिक्वेस्ट सेंड करवा सकता हूँ। एंड इसका इम्पैक्ट यही है कि अगर मैं कोई ऐसी डायरेक्टली एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ देन उसकी परमिशन मेरे पास नहीं होगी, पर अगर वही रिक्वेस्ट मैं सर्वर के थ्रू भिजवाऊँ देन ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू एक्सेस इट। So that's the SSRF, and okay. So we'll have to close the webinar. So thank you so much everyone for joining. I hope you all have learned something new. What is port forwarding? Port forwarding is basically a concept जहाँ पे कोई भी वाइड एरिया नेटवर्क के पोर्ट के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आती है उसको हम लोग लोकल पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक आईपी है मेरा पब्लिक आईपी, जैसे 110 डॉट कुछ भी ऐसे कुछ आईपी है मेरा, उसके किसी एक पोर्ट पे मैं सेट करता हूँ 1234 पे। अगर इस पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो मेरे एक लोकल आईपी के किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब अगर ये आईपी में जैसे समझ लो मेरे इस आईपी पे एक वेबसाइट चल रही है, ये तो प्राइवेट आईपी है, अगर मैं किसी को बोलूंगा कि इस पे जाओ तो ये मैं ही एक्सेस कर पाऊंगा, अगर कोई मेरे नेटवर्क के बाहर है तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। एंड वैन का आईपी ये क्या है, ये पब्लिक आईपी है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो मैं एक फॉरवर्डिंग लगाऊंगा कि इस आईपी के इस पोर्ट पे जो भी रिक्वेस्ट आती है वो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाए, तो इसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट को आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क पे एक्सेसिबल बना सकता हूँ। दिस इज द सिंपल लाइक डेफिनेशन ऑफ पोर्ट फॉरवर्डिंग। All right, so okay, and yes, you can enroll into the certification programs and learn more these kind of topics from the YouTube channel of the Forensic Academy and Next Gen Cybersafe. So okay, it was a nice webinar, and I hope everyone learned something new. So okay, bye bye everyone. I'll be like closing the webinar from now on. Okay, so just you can leave the meet now.
320 रुपए दे दो,